Okay, so the recording has started. Let us start with today's lecture. Before starting today's lecture, just a quick review of what we did yesterday. Yesterday we started with chapter number 15, which is kinetics of a particle, and we discussed the impulse and momentum method for kinetic analysis. The topic which we started yesterday was principle of linear impulse and momentum. Today we are going to continue with this topic. Some of the exercise problems we are going to do it today. Then we will start with the conservation of linear momentum for a system of particles as well. Okay, now just a quick review of what does this principle of linear impulse and momentum states. The principle of linear impulse and momentum states that the initial momentum of a particle, which is being represented by mass times velocity. So what is momentum? Momentum is basically a vector quantity which is being represented by mass into velocity. Since it is a vector quantity, इसमें अगर हम दोनों terms देखें, mass and velocity are being involved in momentum. So since mass is a scalar quantity, it means that the direction of momentum totally depends upon the direction of velocity. For example, if you have a particle which is traveling along the positive x-axis, then it should have a momentum which is directed along the positive x-axis. Similarly, if you have a particle which is moving along the negative x-axis, then its momentum would also be directed towards the negative x-axis. So this term momentum is a vector quantity and its direction totally depends upon the direction of velocity. As far as its magnitude is concerned, it is going to be equal to mass times the magnitude of velocity. As far as the units of this momentum are concerned, since it is mass times velocity, the units of mass are kg, the units of velocity are meter per second. So the units of momentum are going to be kg meter per second. So this principle of impulse and momentum states that the initial momentum of a particle plus sum of all the impulses that are acting on the particle during time interval t1 to t2 should be equal to the final momentum of the particle. Now, this term, which is impulse is being defined as the product of force and time. So F dot delta T is basically termed as the impulse. Again, this impulse is a vector quantity. In this formula, since time is a positive scalar quantity, it means that the direction of impulse depends totally upon the direction of this force F. अगर आपके पास किसी पार्टिकल पे फोर्स जो है it is acting along the positive x-axis, so it would be creating a positive impulse along the x-axis. Similarly, if you have force which is acting along the negative x-axis, so it would be creating a negative impulse along the x-axis. So impulse जो है it is a vector quantity और उसका फॉर्मूला क्या है, F डॉट डेल्टा टी है. और अगर आपके पास एक कांस्टेंट फोर्स है तो आप impulse जो है you determine this impulse using F dot delta t. However, if you have a variable force से क्या मुराद है कि this force is given to you as a function of time. So in that case, you are going to find the impulse by simply integrating that force which is a function of time between time t1 to t2. इंटीग्रेशन की मदद से आप impulse जो है वो find out करते हैं. So impulse के units की अगर हम बात करें तो since impulse के units force into time है, force के unit जो है वो आपके पास न्यूटन होते हैं, टाइम की यूनिट आपके पास सेकंड है. सो न्यूटन सेकंड आर बेसिकली द यूनिट्स ऑफ इंपल्स. इसके मुकाबले में जो मोमेंटम की अगर हम बात करें तो जनरली केजी मीटर पर सेकंड के तौर पे हम रिप्रेजेंट करते हैं. कल हमने ये भी बात की थी कि क्या ये दोनों यूनिट्स इक्विवेलेंट है. यस, दीज टू यूनिट्स आर इक्विवेलेंट बिकॉज न्यूटन क्या होता है, न्यूटन इज बेसिकली केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो सेकंड से ले जाएगा और आपके पास न्यूटन सेकंड भी केजी मीटर पर सेकंड ही बनेगा. सो द यूनिट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर कंसिस्टेंट. बोथ दीज क्वांटिटीज impulse and momentum are vector quantities. The principle of impulse and momentum states that the initial momentum of a particle plus sum of all the impulses that are acting on the particle between time interval t1 to t2 should be equal to the final momentum of a particle. Now, this principle of impulse and momentum is basically a vector principle, a vector equation. It means कि जिस तरह आप equation of motion जो है it was a vector equation as well. So जिस तरह आप equation of motion किसी axis के along किसी coordinate system में apply करते थे, उसी तरह impulse and momentum वाला principle भी आप किसी ना किसी axis के along किसी coordinate system में जो है वो apply कर रहे होंगे. For example, if we consider the xyz coordinate system, so that principle of impulse and momentum is being represented by its three component equations along the x, y and z axis. For example, अगर मैं
मैं x एक्सिस की बात करूं तो द इनिशियल इम्पल्स अलोंग द इनिशियल मोमेंटम अलोंग द x एक्सिस plus sum of all the impulses that are acting along x-axis should be equal to the final momentum along x-axis. Similarly, you can write it along y-axis as well as along z-axis if you are considering the x, y, z coordinate system. Similarly, if you are considering the ntb or r theta z coordinate system, this principle of impulse and momentum can also be written into its component equations along the r theta z or ntb axis as well. Moreover, this principle of impulse and momentum can be applied on a single particle as well as it can be applied on a system of particles as well. When we talk about the system of particle, then this principle can be modified as summation MI/VI, which represents the initial momentum of the system. Initial momentum of the system से क्या मुराद है कि if that system consists of two particles being connected by ropes and pulleys, then the momentum, then the sum of momenta of both these particles is going to be included in this term, which is summation MI/VI. Similarly, summation FI dt means the sum of all the impulses which are acting on that system should be equal to the final momentum of the system. So you can apply this principle of impulse and momentum on a single particle as well as you can apply it on a system of particles as well. I hope that those who were not present yesterday, उनको भी कुछ हद तक समझ आ गई होगी principle of impulse and momentum की. Yes, sir. Okay, now as these terms indicate, this principle of impulse and momentum basically gives you a relationship between forces. यहाँ आपको forces नजर आ रही हैं, so forces, velocities as well as time. So whenever in any problem you need to find out a relationship between F, V and T, you are going to use the principle of impulse and momentum in order to solve that problem. Although that problem can also be solved using either the equation of motion or the principle of work and energy, जिस तरह कल हमने मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स देखे थे. लेकिन ये कि आपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यू नीड टू मैनेज योर टाइम एज वेल. इट मीन्स दैट फॉर एनी प्रॉब्लम विच कैन बी सॉल्व बाय ऑल द थ्री काइनेटिक मेथड्स, you need to select the shortest possible method so that you can manage your time effectively during the evaluation. So आपने खुद जज करना होता है. जब आप ये तीनों मेथड पढ़ लेंगे, आज हम ये तीसरा मेथड भी ऑलमोस्ट पढ़ लेंगे, so आपने उस प्रॉब्लम को देखते हुए खुद जज करना होता है कि किस प्रॉब्लम के ऊपर कौन सा मेथड जो है वो बेस्ट सूटेड होगा. और वो आप किस तरह जज करेंगे, वो आप देखेंगे कि उस प्रॉब्लम में कौन कौन से वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं और उसकी बेसिस पे आप बेस्ट शॉर्टेस्ट मेथड जो है वो जज करके उस पर अप्लाई कर रहे होंगे. So yesterday we solved two examples, 15-1 एंड 15-2. आज जो है वो हम थोड़ा सा एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स की बात करेंगे और उसके बाद फिर जो है वो हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे. ये दोनों टॉपिक्स बिल्कुल उसी तरह हैं जिस तरह अगर आप वर्क एनर्जी मेथड्स की बात करें, द लास्ट चैप्टर वी इनिशियली स्टार्टेड विद द प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी और उसके बाद फिर हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल डिराइव किया था. बिल्कुल इसी तरह अभी हमने प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम देखा और उसके बाद हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला प्रिंसिपल भी जो है वो देखेंगे. बड़ी हद तक सिमिलैरिटी है इन दोनों टॉपिक्स की टू द टू टॉपिक्स ऑफ वर्क एनर्जी मेथड जो कि हमने इससे पिछले चैप्टर में कवर किए हैं. Okay, so yesterday we solved example 15-1 as well as example 15-2. आज जो है वो हम start करेंगे from the exercise problem which is problem 15-10. Okay, now in this problem we have a particle which is this cabinet having a weight of 20 pounds and this cabinet is subjected to a force of F equal to 3 plus 2t pounds. यानी एक variable force act कर रही है इस cabinet पे up that incline as shown to you in the figure. If this cabinet is initially moving down the plane with a velocity of 6 feet per second. So condition क्या given है आपको कि initially the cabinet was moving down this inclined plane at a speed of 6 feet per second. You need to determine how long it will take the force to bring the cabinet to rest. So the cabinet was traveling down the incline. You applied this force on the cabinet which is being applied up the incline along the incline axis. This force has a variable magnitude of 3 plus 2t. It means that with the passage of time the magnitude of the force is going to increase. You need to find out how long will it take for this force to bring the cabinet to rest. F always acts parallel to the inclined plane. Neglect the size of the rollers. Okay, now since rollers are being placed here, so rollers अगर यहाँ लगे हुए हैं तो क्या फर्क पड़ेगा? कोई फोर्स हमने नेग्लेक्ट करनी है रोलर्स की वजह से? Yes, sir. Friction. Yes, sir. Friction.
So once these rollers are being placed on this particle, it means that we don't need to consider the word or the we doesn't need to consider the force of friction in this particular problem. अगर रोलर ना लगे होते, ये कैबिनेट स्किड कर रहा होता इस इंक्लाइन प्लेन पे और स्मूथ का वर्ड इस्तेमाल ना हुआ होता, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन होता, तो आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो इस्तेमाल कर सकते थे. बट बिकॉज ऑफ दीज रोलर्स यू आर नॉट गोइंग टू इंक्लूड द friction force in your problem. So starting first of all drawing the free body diagram of this particle, the weight of this cabinet would be acting in the downward direction. Then you have a normal force, which is this normal force NC, that would be acting normal to the contacting surface. Then you have an applied force, which is a variable magnitude force having a magnitude of F equal to 3 plus 2t, which is acting along the incline of that incline. So these are the three forces which are acting. We need to apply the relevant principle, and we need to define the axis first of all. So we are taking the incline axis to be our major axis, x-axis, and y-axis being defined perpendicular to the inclined surface. So these are the two axes which we are going to use in this particular problem. Okay, now in order to solve this problem, let us start with the principle of impulse and momentum. So applying the principle of impulse and momentum along the x-axis, taking positive x downward. Sorry, मैंने यहाँ axis का जो direction draw किया है वो थोड़ा सा गलत कर दिया. I am basically taking positive x-axis down the incline rather than up the incline. So positive x-axis being defined down the incline, and positive y is being defined perpendicular to the inclined plane in the upward direction. Okay, the principle of impulse and momentum states that the initial momentum of this cabinet, which is being defined as mvx1 plus sum of all the impulses which are acting along which are acting on this cabinet along the x-axis during time interval t1 to t2 should be equal to the final momentum of this cabinet along the x-axis. So this is the principle of impulse and momentum which is being applied on this particle along the x-axis. The principle says that the initial momentum of this cabinet along the x-axis plus sum of all the impulses that are acting on the cabinet along the x-axis should be equal to the final momentum of this cabinet along the x-axis. Okay, starting with the initial momentum term first of all, कि ये जो हमारा initial momentum है, सबसे पहली बात, is it going to be a positive quantity or a negative quantity? Positive. Since initially the cabinet was moving down this incline with a speed of 6 feet per second. So since the cabinet was moving down the incline, तो down the incline हमारी कौन सी axis define हुई है, positive x या negative x? Positive x. Negative. Positive x define हुई है down the incline. So that's why this cabinet has an initial momentum along the positive axis. So mass इसका कितना हो जाएगा? It is going to be 20 over 32.2, which is the mass of this cabinet. So आपके पास mass जो है वो 20 over 32.2 हो जाएगा. मैथ में यहाँ लिख नहीं रहा, मैं उसको सिंपली m के तौर पे डिफाइन करता हूँ. एंड द वेलोसिटी वाज गिवन टू यू एज 6 यूनिट्स, एंड सिंस इट वाज ट्रेवलिंग डाउन द इंक्लाइन व्हिच इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सो इट्स मोमेंटम वुड बी पॉजिटिव. आप पॉजिटिव साइन ना भी लिखें तो कोई हर्ज नहीं, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पॉजिटिव साइन डाल दिए. व्हाट शुड बी द फाइनल मोमेंटम ऑफ दिस कैबिनेट? जीरो. Since you need to find out कि इस फोर्स को अप्लाई करने के कितनी देर बाद this cabinet comes to rest. So once this cabinet comes to rest, the final momentum of this cabinet would be equal to 0. Okay, now coming to the center terms which involve impulses. What are the impulses what are the forces that would be creating impulse along the x-axis from the free body diagram? Can you identify those forces which would create impulse along the x-axis? Yes, sir. Weight W One and force F. Okay, one is the weight of this cabinet which would be creating impulse along the x-axis. What should be the value of that impulse? It is going to be the force multiplied by time. So W into T is going to be that impulse. कोई साइन कॉस भी हम ऐड करेंगे? Yes, sir. कौन सा कंपोनेंट होगा W का? Sir, ये होगा sin 20. It is going to be sine of
20. So W sin 20 into T is going to be the impulse. Basically, आप अगर W के components consider करें तो this angle is 20 degrees. So W cos 20 is along the y-axis. W sin 20 is along the x-axis. Positive, negative impulse क्या create करेगा ये? सर ये पॉजिटिव करेगा. So Yes, since sir. this component would be acting towards the positive x-axis, which is down the incline, so it would be creating a positive impulse. So that's why we have put a positive sign here. Okay, any other force that would create a impulse along x-axis from the free body diagram? यस सर, ये जो फोर्स हम लगा रहे हैं उसको रोकने के लिए. So the applied force, which is equal to 3 plus 2t, and since it is a variable force, so its impulse is going to be determined using integration from t1 to t2. t1 अगर मैं कहूँ 0 है मेरे पास और t2 मेरे पास t है, तो ये 0 से t के दरमियान 3 plus 2t को मैं इंटीग्रेट करूंगा. I am going to get the impulse. This force would be creating a positive impulse or a negative impulse? सर नेगेटिव इम्पल्स. So since it is acting towards the negative x-axis, that is up that incline, so that's why it will be creating a negative impulse. So this is going to be the principle of impulse and momentum, which says that the initial momentum of this cabinet, which is this term 6m, plus sum of all the impulses that are acting on this cabinet during time interval t1 to t2. उसमें दो forces हमने देखी. One is the weight, which would create a positive impulse. The other one is the applied force, which would be creating a negative impulse, is equal to the final momentum of this cabinet along the x-axis. So final momentum के लिए हमने जिस तरह बात की कि हमें वो उस force का magnitude वो find करना है जिस time पे जाके ये इस cabinet को rest पे ले आए. So the final momentum is going to be 0. Okay, what is the unknown in this particular case? सर टाइम टी जो अप्लाइड फोर्स के साथ लगा. टाइम t is unknown. So जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे 3 plus 2t, तो ये आपके पास 3t plus 2t square by 3 आ जाएगा और उसको फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ले आएंगे और फाइनली आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जब आप इसको इंटीग्रेट करके और इस टर्म को लेकर आएंगे. सो इट वुड बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इट मींस दैट टू रूट्स आर गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर दिस पर्टिकुलर केस. So solving this equation, you will get two roots. One would be positive, probably the other one would be negative. So you are going to choose the positive root, which is t equal to 4.64 seconds. So this is going to be the time जिस पे जाके जब ये force आप apply कर रहे हैं तो ये cabinet जो है it is going to be at rest. Is it clear to all of you? यस Yes, सर. sir. Okay. So can you solve this problem using the equation of motion as well? Yes, sir. जिस यस तरह सर. कल हमने डिस्कस की थी. कैन वी सॉल्व इट यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन एज वेल? Yes, और sir. अगर कर Equation सकते हैं तो कैसे? इसमें वही x कंपोनेंट के लॉन्ग पहले तो समेशन ऑफ fx करेंगे. तो अगर हम समेशन fx इक्वल टू ma(x) करने चले, इसी बहाने आपका ये वाला टॉपिक रिवाइज हो रहा है आज, जिसमें से आज क्विज भी होने हैं. सो समेशन fx इक्वल टू ma(x) कर लेंगे. सो आपके पास जो फोर्सेस x डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं वो वेट का कंपोनेंट है और ये अप्लाइड फोर्स है. इससे आपको क्या मिल जाएगा? आपको मसलन फॉर एग्जांपल आप डाउनवर्ड x डिफाइन करते हैं तो आपके पास w sin 20 माइनस 3 plus 2t equal to ma. ऐसे ही है. Yes, sir. यस सर. ओके, सो इट मींस कि आपको यहां से क्या मिलेगा? Acceleration and time. एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ Time. Yes, sir. टाइम मिल जाएगी. सो एक्सेलरेशन आपको मिल गई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. क्या करेंगे इसके साथ? इसमें सर हमें इसको डेल्टा इंटीग्रेट करके फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे उसकी. क्या इक्वेशन कौन सी अप्लाई करेंगे? a is a function of time and that a ये is basically dv over dt होता है. dv over dt होता है. सो आप Yes. dv इक्वल टू ft dt करके दोनों साइड्स को Yes, sir. इंटीग्रेट कर लेंगे विद इन द लिमिट्स. ठीक है, तो उससे आपको यही टाइम मिल जाएगा. इज इट क्लियर? यस Yes, सर. sir. तो वही बात है कि आपको जनरली काइनेमेटिक्स के जितने भी प्रॉब्लम्स गिवन होते हैं ना, आपके पास चॉइस होती है कि आप तीनों में से कोई सा भी मेथड अप्लाई कर सकें. लेकिन देखिए यहाँ इम्पल्स एंड मोमेंटम ने आपको सिंगल स्टेप में सोल्यूशन दिया है. यहाँ पहले आप स्टेप करके एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड करते, फिर काइनेमेटिक्स इस्तेमाल करते हुए आप जो है वो उसको इंटीग्रेट करते, तो 2 स्टेप्स में सोल्यूशन मिलना था. अगेन क्या आप इस पर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं?
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करेंगे या वर्क एनर्जी करेंगे? सबसे पहली बात तो ये सर वर्क एनर्जी करेंगे। वर्क एनर्जी करेंगे। व्हाई नॉट कंजर्वेशन? तो इसमें सर अनबैलेंस इसमें वो अप्लाइड फोर्स इन्वॉल्व है तो वो नॉन कंजर्वेटिव है। Yeah, so since applied force is being involved here, which is a non-conservative force, so that's why we cannot apply the conservation of energy principle on this problem. Therefore, work energy principle मैं apply करूंगा. Okay, work energy principle अगर मैं करता हूं तो work energy principle कहते हैं T1 plus summation 1 to 2 U equal to T2. चले T2 तो 0 हो गया, T1 आपके पास half mv square हो गया. Summation U 1 to 2 वाली टर्म्स में कौन कौन सी टर्म्स आएंगी? कोई अंदाजा है आपको? वर्क डन ड्यू टू वेट आ जाएगा, और क्या आएगा? वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स। वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स आ जाएगी। ओके, चलें वेट की वजह से वर्क डन तो फाइंड कर सकते हैं आप। उसके लिए डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए होगी। डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगी। इवन वर्क डन ड्यू टू अप्लाइड फोर्स भी फाइंड करने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए होगी, ऐसा ही है। वो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से आएगी? उसके सर लिए वो जो एस पहले फंक्शन बनाया था उसी को दोबारा इंटीग्रेट कर देंगे। 20 स्क्वायर लगाना पड़ेगा। प्रोबेबली आपके पास दोबारा जैसे a एज अ फंक्शन ऑफ टाइम था, आपने dv ओवर dt फाइंड किया था, इसी को आप दोबारा इंटीग्रेट करके ds बाई dt कर लें तो कहानी और लंबी हो जाएगी। सॉल्व हो जाएगा फिर भी, लेकिन प्रोबेबली आपको 3 या 4 स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो प्रॉब्लम सारे के सारे आप सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग एनी ऑफ दीज काइनेटिक मेथड्स, लेकिन आपने अपनी जजमेंट को देखते हुए बेस्ट शॉर्टेस्ट पॉसिबल मेथड जो है वो किसी भी प्रॉब्लम पे अप्लाई करना होता है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। चलें अब थोड़ा सा हम एक मुश्किल प्रॉब्लम देखते हैं जो एक्सरसाइज है, और बेसिकली ये जो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है विच इज 15-30, ये प्रॉब्लम बेसिकली हमारी अंडरस्टैंडिंग बनाएगा फॉर अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रिंसिपल। तो इसलिए थोड़ा सा इस प्रॉब्लम को आपने गौर से समझना है कि इसमें क्या हो रहा है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड द स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रॉब्लम, और उसके बाद थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह इसका सोल्यूशन किया जा सकता है। The 0.15 kg baseball has a speed of 30 meters per second just before it is being struck by the bat. So you have this baseball which is traveling with a speed of 30 meters per second at an angle of 15 degrees with respect to the x-axis when it is being struck by the bat. Once the bat strikes the ball, it then travels along the trajectory which is shown to you as this trajectory until the outfielder catches it at the position shown. So once the bat struck this ball, it gives that ball a velocity v2 which is being directed at an angle of 30 degrees with respect to the x-axis. As a result of this velocity, the ball follows this trajectory जो कि आपको ये शो की गई है until the outfielder catches it at the position shown. Okay, now what do you need to determine here? You need to determine the magnitude of the average impulsive force being imparted to the ball if it is in contact with the bat for a time period of 0.75 milliseconds. So the interaction between this bat and ball is going to take place in this short time, which is 0.75 millisecond, and during this time the bat exerts some impulse on this ball. As a result of this impulse, the momentum of this ball changes from this direction to this direction. यानी अगर हम impulse and momentum principle को भी देखें तो impulse and momentum principle बेसिकली क्या कह रहा है कि impulse and momentum principle कहता है कि आपका जो momentum में change आ रही है उसके लिए क्या चीज responsible होती है, उसके लिए आपके पास उस interaction के दौरान कितनी impulse एक्ट कर रही है उस पार्टिकल के ऊपर, वो मैटर करती है। सो एक तरह से ये इम्पल्स जो है वो मोमेंटम की में जो चेंज है वो ला रही होती है। तो यहाँ भी यही हो रहा है इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कि इस बॉल के ऊपर बैट जो इम्पल्स एक्सर्ट कर रहा है वो बेसिकली इसके मोमेंटम में चेंज ला रहा है। इनिशियली इसका मोमेंटम जो बॉल का था वो इस डायरेक्शन में था जो कि v1 का डायरेक्शन था, और इंटरेक्शन के बाद ये मोमेंटम जो है वो v2 के डायरेक्शन में आ गया बॉल का जो मोमेंटम है। सो वी नीड टू फाइंड आउट कि कितना इंपल्स इस बैट ने बॉल के ऊपर इस टाइम पीरियड में एक्सर्ट किया है। इज द क्वेश्चन क्लियर टू ऑल ऑफ यू?
उसके बाद फिर हम डिस्कशन करते हैं। यस सर। ओके, सो लेट मी क्लियर द स्क्रीन ताकि अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। सो हमने बेसिकली वी नीड टू डिटरमिन द इम्पल्स बीइंग एक्सर्टेड बाय दिस बैट ऑन द बॉल ड्यूरिंग दिस शॉर्ट interaction which is of 0.75 millisecond. Okay, now the bat would be exerting impulse on the ball in this particular direction. Let's say मैं इसको कहता हूँ this is the average impulse which the bat would be exerting on the ball during this time interval. Okay, in order to find out this average impulse, अगर मैं इसके components बनाऊं तो ये इसका y कंपोनेंट इम्पल्स का, ये इसका x कंपोनेंट है। इन अदर वर्ड्स, अगर मैं कन्वेंशनल एक्स वाई एक्सिस लेके पहले इम्पल्स एंड मोमेंटम का प्रिंसिपल x एक्सिस के ऊपर अप्लाई कर दूं, उसके बाद मैं इम्पल्स एंड मोमेंटम का प्रिंसिपल जो है वो y एक्सिस के ऊपर अप्लाई कर दूं, तो उससे मुझे ये दोनों कंपोनेंट्स मिल जाएंगे जिसको मैं कहता हूँ सपोज f एवरेज y एंड f एवरेज x मुझे मिल जाता है। और फिर मैं इन दोनों, चूंकि मुझे ये दो कंपोनेंट्स मिल गए एक वेक्टर के, मुझे एफ एवरेज चाहिए तो इट इज गोइंग टू बी द वेक्टर सम ऑफ एफ एवरेज एक्स एंड एफ एवरेज वाई। तो मैं एफ एवरेज एक्स स्क्वायर प्लस एफ एवरेज वाई स्क्वायर होल अंडर रूट की मदद से इसका मैग्नीट्यूड जो है वो डिटरमिन कर सकता हूँ। बट बिफोर अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ impulse and momentum on this ball just before striking the bat and just after striking the bat, shall we do we know the value of v2 जिस वेलोसिटी के साथ ये लॉन्च हुई है आफ्टर द इंटरेक्शन विद द बैट? नो सर। सो जब तक हमें वो वेलोसिटी v2 नोन नहीं होगी, मैं वो इंपल्स एंड मोमेंटम का प्रिंसिपल नहीं अप्लाई कर सकता, क्योंकि अगर मैं अप्लाई करता भी हूं तो उसमें मेरे पास एफ एवरेज एक्स वाई दो ही अननोन है, और साथ में अगर v2 भी अननोन हो तो तीन अननोन हो जाते हैं। इट मींस के पहले किसी तरह आई नीड टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ v2, ओनली देन आई विल बी एबल टू अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ इंपल्स एंड मोमेंटम ऑन दिस बॉल, इजंट इट? यस सर। So how we are going to determine the magnitude of this V2? Do you have any idea? सर मोस्ट प्रोबेबली सर प्रोजेक्टाइल मोशन की मेथड से फाइंड कर सकते हैं। Okay, so initially let us apply the projectile motion equations from point A, which is the point after the interaction is being made, that gives this ball a velocity of v2, to point B where the outfielder catches it. So point A से B के दरमियान में सबसे पहले तो projectile motion की equations जो है वो apply कर लूँ। In order to apply that projectile motion equation, do you remember हमें कहीं ना कहीं origin जो है वो define करना पड़ता था? So let us define that origin at our initial point, which is point A. So defining the origin at point A, and first of all considering the horizontal motion equation, which is of the form x equal to x naught plus v naught x t, जिसको मैं टी ए भी लिखूंगा, और इस टाइम को इस 0.75 से आपने कंसिडर नहीं करना, कंफ्यूज नहीं करना। ये टाइम टी ए बी है, विच इज द टाइम ऑफ फ्लाइट of this ball from point A to point B. It is not equal to 0.75 millisecond because 0.75 तो बैट और बॉल के इंटरेक्शन का टाइम है। So applying the range equation, what is x? Can you identify x from the figure? Yes sir, 100. So it is 100. What is x naught? 0. Since we have defined the origin at initial point A, so this x naught is going to be equal to 0. What about v naught x? v2. v2 cos 30. Yes. And this is going to be TAB. So let us say that this is our equation number 1. In this case, v2 and t both are unknown. It means that we need some other equation as well in order to find out that time. So we will move on to the vertical motion. What vertical motion equation shall we apply here? Y is equal to y naught plus. So it is y equal to y naught plus v naught y TAB minus half GT square. Okay, can you identify the value of y? Yes sir, 2.5. Are you sure? 2.5 minus 0.75. Yeah, it is 2.5 minus 0.75 since the origin is being defined at A. So A से B तक y distance कितना होगा? It is going to be from this geometry 2.5 minus 0.75.
1.75. So it is going to be equal to 1.75. What about y naught? तो फिर जीरो होगा अगर उस एक्सिस से देखें. Since the origin is being defined at a, so y naught would be equal to 0. What about v naught y? It is going to be v2 sine of 30t minus half gt square. So this would be our equation number 2. So we have two equations, two unknown. आप इसको solve करें, equation number 1 से t की value निकाल लें और उसको put कर दें equation number 2 में. You will get the value of v2 to be equal to 34.18 meter per second. So this is just a revision of our projectile motion. So this is the velocity which this ball is being launched at point A after the interaction with this bed. Is this point clear to all of you? Yes, sir. Okay, so let us clear the screen once again. और अब हम थोड़ा सा अपनी असली कहानी पे आ जाते हैं. So हमने अभी डिटरमिन किया कि using the motion of projectile equation, the velocity of this ball comes out to be v2 equal to 34.18 meter per second with which the ball is being launched. और अभी जो बात हुई थी कि हम अगर कहते हैं कि ये वो एवरेज इम्पल्स है जो ये बैट एक्सर्ट कर रहे हैं ऑन दिस बॉल, वी नीड टू resolve this impulse into its components along the x and y axis. So this is the component of this average impulse along the x axis जिसको मैं f average x कहता हूँ. This is the component of this impulse along the y axis जिसको मैं f average y कहता हूँ. Okay, now what should I do next? मुझे velocity तो मिल गई है v2. What should I do next? इम्पल्स वाली इक्वेशन लगा दें. माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम कर देंगे हर कंपोनेंट के लिए इस अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. क्या कर देंगे? दोबारा रिपीट करें. सर डिफरेंस ऑफ मोमेंटम ऑफ फाइनल एंड इनिशियल along the x and y axis. Okay, so using the conventional x and y axis and starting with using the conventional x, y and y axis and starting with first of all writing this equation along the x axis. So the equation of principle of impulse and momentum states that the initial momentum along x-axis plus sum of all the impulses that are acting along x-axis should be equal to the final momentum along x-axis. So first of all, what is the initial momentum of this ball along the x-axis? Can you identify it from the figure? यस सर मास क्या इनटू होगा? v1 Okay, into mass इसका है cos 0.15, and 30 into cos 30 30 cos of 30 or 15. 15 sir 15 because we are considering the initial momentum which is v1 की वजह से जो momentum आ रहे हैं. So 30 cos 15. In what direction this 30 cos 15 component would be acting, towards the positive axis or the negative axis? negative axis. So the momentum of this ball before it is being struck by the bat is going to be minus 0.15 into 30 cos of 15. Is this point clear to all of you? नेगेटिव साइन समझ आ गई है? आई होप कि नेगेटिव साइन क्लियर है इस तरह हर एक को. जी सर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया. देखें, इस बॉल की इनिशियल वेलोसिटी थी v1 which is at an angle of 15 degrees with respect to the x-axis. So चूंकि हम कह रहे हैं कि we are applying the principle of impulse and momentum on this ball, position 1 या हम first point क्या define करें, before it is being struck by the bat, और second position क्या है, after it is being struck by the bat. So initial momentum before it is being struck by the bat is towards the left side of this x-axis, जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है. आई एम टेकिंग पॉजिटिव एक्स टुवर्ड्स द राइट. तो आपके पास जो बॉल का मोमेंटम बिफोर इट इज बीइंग स्ट्रक बाय द बैट था वो टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस है, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ नेगेटिव साइन आया है. ठीक है, क्लियर हो गया. ओके. ड्यूरिंग दिस इंटरेक्शन व्हाट इज द impulse which is acting on this ball along the x axis?
Sir, initial velocity along x-axis is minus final velocity along x-axis divided by time. देखिए मैं भी आपसे एक और चीज पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्रिंसिपल ऑफ इंपल्स एंड मोमेंटम कहता है कि द इनिशियल मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल प्लस सम ऑफ ऑल द impulses which are acting on this particle during that interaction should be equal to the final momentum of the particle. तो यहाँ अभी हमने इनिशियल मोमेंटम लिखा है, अब इस एक्स एक्सिस के अलोंग इस बॉल के ऊपर इंपल्स कौन कौन सी एक्ट कर रही है इस इंटरेक्शन के दौरान? सर एक तो एफ एवरेज एक्स वाले जो इम्पल्सिव फोर्स जी, है, impulse due to this interactive force of this bed, जिसको मैंने f average x कहा था, तो impulse कैसे बनता है? फोर्स को आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं? टाइम टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं. सो व्हाट इज द टाइम हियर? 0.75 मिलीसेकंड्स. 0.75 into 10 raised to power minus 3, यही आ जाएगा. यस सर. So this is going to be the impulse. पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा? पॉजिटिव. Since this f average x is acting towards the positive x-axis, so it would be creating a positive impulse. So the initial momentum of this ball along x-axis plus the impulse which is acting on this ball along the x-axis should be equal to the final momentum of this ball along the x-axis. So what is the final momentum of this ball? पॉजिटिव है और वो v2 के साथ है. So 0.15, which is the mass of this ball, into V2 cos of 30, which is 34.18 cos of 30. Clear है ये चीज? पॉजिटिव साइन क्यों आया? बिकॉज V2 इज डायरेक्टेड इन द फर्स्ट कोऑर्डिनेट, तो उसका x कंपोनेंट आपके पास पॉजिटिव बनेगा. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर. किसी को इस इक्वेशन में कोई टर्म ना समझ आई हो? क्लियर है सर. Okay, so now moving on to the principle of impulse and momentum along the y-axis. What is the initial momentum of this ball along the y-axis before it is being struck by the bed? नेगेटिव है और 30 sin 15. So it is going to be minus 0.15 into 30 sine of 15, isn't it? यस सर. Okay, so ये आपके पास initial momentum आ गया इस बॉल का before it is being struck by this bed. Okay, what is the impulse which is acting along the y-axis? F average y into Okay, time. so writing it as positive f average y, और टाइम कितना है? वही 0.75 into 10 raised to power minus 3, and that should be equal to final momentum of this ball along the y-axis. Final momentum कितना है? 0.15 34.18 sine of 30. पॉजिटिव. So, ठीक है, और ये पॉजिटिव होगा. सो ये हमने दो इक्वेशन लिखी. वन वाज यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ impulse and momentum along the x-axis. The other one was the principle of impulse and momentum along the y-axis. Now when you solve equation number 1, जब आप equation number 1 को solve करेंगे, the value of f average x would comes out to be 11715. So 11715.7 Newton आ जाएगा. This is the average impulse which is acting along the x-axis. Similarly, once you solve the second equation, you will get f average y to be equal to 4970.9 Newton. So f average x भी आपके पास आ गई, f average y भी आपके पास आ गई. So what is going to be the value of this f average? सर वो अंडर मॉड्यूलस निकालेंगे, अंडर रूट एफ एवरेज एक्स प्लस स्क्वायर प्लस एफ एवरेज वाई स्क्वायर. That's correct. So आपके पास इन दोनों को f average x और f average y को जब आप सम कर लेंगे, यानी बेसिकली ये f average के दो कंपोनेंट्स हैं, तो एक वेक्टर के जब आपको दो कंपोनेंट्स मिल जाएं, उसको स्क्वायर करके सम करके अंडर रूट लें, आपके पास f average आ जाएगी which is 12.7 किलो न्यूटन. So this is going to be the average impulsive force which the bat exerts on the ball during this
इंटरेक्शन। यहां तक हर एक को समझ आ गई है? अभी मेरे आपसे 2 क्वेश्चन है, डिस्कशन पॉइंट्स, जो कि हमारी बेसिस बनेंगे फॉर द नेक्स्ट टॉपिक जो कि आज हमने शुरू करना है। लेकिन फिलहाल यहां तक कोई चीज जो आपको ना समझ आई हो? यस सर। क्लियर है? यस सर। ओके, नाउ 2 क्वेश्चंस मेरे आपसे हैं। The first question is, once we were discussing the principle of impulse and momentum, हमने जब impulse की बात की थी, हमने कहा क्या था कि आपके पास सपोज एक पार्टिकल है जो कि से रेस्ट पे है। सो दिस पार्टिकल वाज एट रेस्ट एट दिस पॉइंट। आप इस पार्टिकल के ऊपर एक अदद फोर्स अप्लाई करते हैं, विच इज दिस फोर्स F being applied on this particle, say at an angle of 30 डिग्रीज। इस इम्पल्स यानी फोर्स आप जब अप्लाई कर रहे हैं तो इस फोर्स की वजह से इम्पल्स जो है वो आपको इसी डायरेक्शन में मिलेगा, विच इज गोइंग टू बी फोर्स इनटू डेल्टा टी। और इस इम्पल्स के नतीजे में ये पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में जो है वो मोमेंटम से, इतने मोमेंटम से जो है वो मूव कर जाएगा। ऐसे ही है प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम जो है। यस सर। ओके, सो यहां अब अगर मैं इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की बात करूं, एफ एवरेज आप अप्लाई कर रहे हैं, विच इज द वेक्टर सम ऑफ एफ एवरेज एक्स एंड एफ एवरेज वाई। सबसे पहली बात तो ये है कि क्या आप ये एंगल थीटा डिटरमिन कर सकते हैं जिस पे ये एफ एवरेज एक्ट कर रहा है? कैन यू डिटरमिन दिस एंगल थीटा? यस सर, क्योंकि V2 के एंगल के अकॉर्डिंगली ही होगा। क्या होगा सर वही 30 डिग्रीज विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। हाँ, दैट इज माय फर्स्ट डिस्कशन पॉइंट कि चूंकि ये बॉल 30 डिग्रीज के ऊपर लॉन्च की जा रही है, इट मींस कि आपके ख्याल में ये एवरेज इम्पल्स भी 30 डिग्री पे एक्ट करना चाहिए। क्या आप ये थीटा निकाल सकते हैं यूजिंग सिंपल ट्रिग्नोमेट्री? 2 कंपोनेंट्स मिले हुए हैं एक वेक्टर के, ये एंगल थीटा आप डिटरमिन Yes, कर sir. सकते हैं। कैसे? Tangent y टेंजेंट, divided by यस, divided by टेंजेंट इनवर्स एफ एवरेज वाई ओवर एफ एवरेज एक्स। कैलकुलेटर है किसी के पास? यस सर, 22.99 आ रहा है। ओके, इट मींस के ऑलमोस्ट 23 डिग्री ये थीटा आ रहा है। तो यस सर। बॉल तो 30 डिग्रीज पे लॉन्च की जा रही है, तो फिर हमारा वो कॉन्सेप्ट तो गड़बड़ कर गया। सर ये एवरेज करने की वजह से तो नहीं है? थोड़ा सा सोचें इस हवाले से, बाकी लोग भी सोचें कि देखें, मैं इंपल्स एक्सर्ट कर रहा हूँ 23 डिग्रीज पे, बॉल 30 डिग्री पे जा रही है, ऐसा क्यों है? सर impulse I think सर टाइम का डिफरेंस बहुत ज्यादा कम है। सर मेरे ख्याल से इसका ये इशू है कि इनिशियली ना मोमेंटम हमारा वैसे ही जो आ रहा है वो 15 डिग्रीज पे आ रहा है। दैट्स करेक्ट। आपके पास जब अभी हमने उस फिगर पे गए थे, मैंने आपको कहा था एक बॉल रेस्ट पे है और उसको आप जिस डायरेक्शन में इंपल्स देंगे मोमेंटम भी उसको उसी डायरेक्शन मिलेगा। लेकिन ये वाली जो बॉल है, इट इज नॉट एट रेस्ट बिफोर इंटरेक्शन, इट वाज बेसिकली हैविंग सम मोमेंटम व्हिच इज एट एन एंगल ऑफ 15 डिग्रीज। तो बेसिकली 15 डिग्रीज पे ऑलरेडी उसका इनिशियल मोमेंटम था और मोमेंटम की मैग्नीट्यूड भी थी कोई ना कोई। तो ये जो इंपल्स आप इस पे एक्सर्ट कर रहे हैं, इसने उस मोमेंटम को ओवरकम करके इसको, इसके मोमेंटम को चेंज लानी है। तो एक तरह से 15 डिग्रीज ये इसलिए आ रहा है रादर देन 30 डिग्रीज या 23 डिग्रीज, कि इसने उस मोमेंटम को ऑलरेडी ओवरकम किया है और उसके बाद फिर इसके मोमेंटम को चेंज लाया है और मजीद 15 डिग्रीज जो है फ्रॉम इट्स इनिशियल मोमेंटम डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दिया इसके मोमेंटम को। सो आई होप दैट दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि ये थीटा हमारे पास 15 या 30 डिग्री क्यों नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि दिस बॉल वाज नॉट एट रेस्ट बिफोर द इंटरेक्शन, रादर इट वाज हैविंग सम मोमेंटम ड्यू टू दिस 30 मीटर पर सेकेंड, जिसकी वजह से पहले जो इंटरेक्शन है वो इस मोमेंटम को कवर करेगा और फिर इसको मजीद चेंज करके V2 के डायरेक्शन में जो है वो फेंक देगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। अगर तो ये बॉल रेस्ट पे होती तो जिस डायरेक्शन में आप ये एफ एवरेज लगाते, एग्जैक्टली मोमेंटम या V2 भी उसी डायरेक्शन में आता। लेकिन चूंकि इंटरेक्शन से पहले दिस बॉल वाज नॉट एट रेस्ट, दैट्स व्हाई आपको एफ एवरेज का जो डायरेक्शन है और V2 जो है वो चेंज है, क्योंकि इस एफ एवरेज ने पहले उस मोमेंटम को कवर करना है और फिर उसके मोमेंटम को मजीद चेंज लाना है उसके डायरेक्शन में भी और उसके मैग्नीट्यूड में भी। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी मैं दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने रखने लगा हूं। यस सर। Okay, now my next question is, have we missed something once we were writing this principle of impulse and momentum along the y-axis? क्या कुछ हम मिस तो नहीं कर गए? Yes कोई sir, टर्म? gravitational force, कौन सी फोर्स? gravitational weight।
वेट, सो वेट इज आल्सो अ फोर्स। और वाई डायरेक्शन में जब आप प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम लिख रहे हैं तो क्या उस वेट की वजह से इम्पल्स नहीं आएगी? सर आएगी। वेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम नहीं एक्ट करती, वो तो कांस्टेंट एक्ट करती रहती है। नहीं, देखें, ड्यूरिंग द इंटरेक्शन की हम बात करें ना, ये प्रिंसिपल ऑफ इम्पल्स एंड मोमेंटम क्या कहते हैं कि द इनिशियल मोमेंटम ऑफ दैट पार्टिकल, चलो वाई एक्सिस की अगर मैं बात करूं, एक्स में तो वेट एक्ट नहीं कर रहा, वाई एक्सिस के अलोंग क्या ये प्रिंसिपल कहता है कि इस इंटरेक्शन से पहले इस बॉल का जो वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंटम था वो हमने लिख लिया कि ये वो मोमेंटम था, प्लस इस इंटरेक्शन के दौरान वाई एक्सिस के अलोंग जो जो इंपल्सेस एक्ट कर रही हैं, तो एक तो इंपल्स ये एफ एवरेज वाई की वजह से एक्ट कर रही है, लेकिन वेट भी तो वाई एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहे हैं, तो क्या इंपल्स सर आनी नहीं देखिए, चाहिए वेट की वजह से? इनिशियली जो हमने मोमेंटम लिखा है तब भी वेट एक्ट कर रहा था, इंटरेक्शन के दौरान भी कर रहा है, तो वो तो यानी ये तो नहीं कह सकते सिर्फ इंटरेक्शन के दौरान ही एक्ट कर रहा है वेट। देखें, हम तो इस टाइम पे जो प्रिंसिपल अप्लाई कर रहे हैं वो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग और जस्ट आफ्टर स्ट्राइकिंग है ना, तो जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग इसका इतना मोमेंटम था, ड्यूरिंग इंटरेक्शन इसके ऊपर एफ एवरेज वाई एक्ट कर रहा है वाई एक्सिस में, और वेट भी एक्ट कर रहा है वाई एक्सिस में, और इंटरेक्शन के इमीडिएटली के बाद उसका मोमेंटम जो है वो ये है। सो ड्यूरिंग दैट इंटरेक्शन एफ एवरेज वाई के अलावा क्या वेट एक्ट नहीं कर रहा था? मेरा आपसे ये सवाल है। यस सर फिर कर रहा करेगा। था लेकिन कैंसिल हो जाएगा दोनों साइडों पे, क्योंकि किस वो कौन से एम्पलीट्यूड दोनों वाली साइड है। से? सर सर इक्वल इनिशियल और फाइनल केस इक्वल होगा ना। यस सर। नहीं, देखें, आप फिर इसको कंफ्यूज कर लेकिन रहे सर हैं। वो रेजिस्टेंस एक प्रोवाइड कर रहा होगा ना। कर रहा होगा, वो वेट डेफिनेटली कर रहा होगा। अब जरा मुझे सिर्फ एक बात बताएं, अगर मैं वेट की वजह से इंपल्स लिखूं तो यहाँ इट मींस कि मैं एक टर्म को ऐड कर दूंगा जहां मैंने रेड निशान शो की है, ऐसे ही है? यस सर। वेट की वजह से जरा मुझे कैलकुलेट करके बताएं इंपल्स आएगा कितना? इंपल्स ड्यू टू वेट क्या होता है? 0.15 जो कि मैस है, मल्टीप्लाई बाय 9.81 जो कि जी की वैल्यू है, तो ये वेट हो गया। इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 0.75 into 10 raised to power minus 3. So how much would be this value? 10 raised to power minus 3 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ आप बात कर रहे हैं किलो न्यूटन की, यानी ओवरऑल जो बैड इंपल्स एक्सर्ट कर रहे हैं दैट इज 12.7 किलो यस न्यूटन। यहाँ किलो न्यूटन की बात हो रही है, और वहां आपका 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 और 0.15 की बात हो रही है। यस सो सर। कितना थर्ड डेसिबल पे जाके शायद कोई फर्क लाएगा ये वेट की वजह से जो इंपल्स है? यस सर यस मिली सर न्यूटन। ऐसे ही है। तो चूंकि वो इंपल्स इतना कम एक्सर्ट कर रहे हैं, तो जनरली वो तमाम फोर्सेस जो कि इंतहाई कम अमाउंट में इंपल्स एक्सर्ट कर रही हो वो हमारे पास नॉन इंपल्सिव फोर्सेस कहलाती हैं। जिस तरह यहाँ हमारे पास वेट आ गया, ऑल्दो वेट अगर हम 9.81 से मल्टीप्लाई करें तो ऑलमोस्ट आपके पास 10 इंटू 1.5 न्यूटन आ रहा है, लेकिन जब आप उसको 0.75 या इंटरेक्शन टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल जो इंपल्स होगा वेट की वजह से वो इंतहाई कम होगा एज कंपेयर टू द इंपल्स बीइंग एक्सर्टेड बाय दिस बेड। तो अगर मैं उसको शामिल कर भी लेता हूं अपनी इस इक्वेशन में, तो कहीं तीसरे डेसिमल पे जाके मेरे पास कोई चेंज आएगी। तो जनरली मैं वो तमाम फोर्सेस जो इंतहाई कम अमाउंट में इंपल्स क्रिएट कर रही हूँ, अभी हमारा अगला टॉपिक भी यही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला, कि उन तमाम फोर्सेस को हम अपनी इंपल्स एंड मोमेंटम एनालिसिस से इग्नोर कर देते हैं। आप अगर चाहें यहाँ शामिल कर लें, आप अगर चाहें यहाँ इसको इग्नोर कर दें, बहुत कम अमाउंट में आपका यहाँ इस चीज के ऊपर फर्क आएगा जाके। दैट्स वाई हम वेट की वजह से इंपल्स शामिल नहीं करें। बेसिकली बॉल के मोमेंटम में जो चेंज ला रहा है वो वेट ऑफ द बॉल का इंपल्स नहीं है, बल्कि जो बैट इंपल्स बॉल के ऊपर एक्सर्ट कर रहे हैं वो बेसिकली उसमें चेंज लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दैट्स वाई हमने वेट की वजह से यहाँ इंपल्स जो है वो नहीं लिखा। अगर हम लिख भी लेते हैं तो हमारे सोल्यूशन पे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, सिवाय इसके कि तीसरे डेसिमल पे या दूसरे डेसिमल पे जाके एक डिजिट कोई चेंज हो जाएगा। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर यस ठीक है। सो दैट्स वाई अभी ऐसा करते हैं, 9:40 हुआ है, आज हम पहले ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद वापस आके हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम क्विज कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हम खत्म कर लेते हैं, हमारा ये टॉपिक खत्म हो गया है विच इज द प्रिंसिपल ऑफ इंपल्स एंड मोमेंटम। हम कोई 10-1 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि मेरी ये कॉल आ रही है, मुझे वो अटेंड करनी है। सो 9:40 हुआ है, 9:50 पे हम दोबारा गैदर होंगे, कोई 10-1 मिनट का हम टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद 10 बजे हम जो है वो क्विज स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, सो आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग राइट नाउ और इंशाल्लाह आपसे 10 मिनट बाद दोबारा डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे।